friends, welcome back to my channel with another video. और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही important topic में, so which is like we keep on talking about the modification of the bikes, right? कि चलो modification is a very costly affair और किसी किसी लोगों की ये एक हॉबी हो जाती है कि एक नया बाइक लूँगा and I'll modify it to my own taste, right? So रॉयल एनफील्ड के बारे में नहीं बोलूँगा. इट इज़ एक्चुअली रॉयल एनफील्ड इज़ द मोस्ट मॉडिफाइड बाइक इन इंडिया, राइट? सो बहुत सारे लोग ऐसे रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं और दे मॉडिफाइड टू देयर ओन टेस्ट विच इज़ परफेक्टली ओके. फ्यू ऑफ द मॉडिफिकेशंस आर इलीगल बट स्टिल पीपल डू इट बिकॉज ऑफ देयर ओन प्लेजर. तो वो एक चीज़ है जो कि मैं सोचा कि आप लोगों से बात कर लिया जाए आज कि this is also a very important topic and what all modifications you can look at and is that all modification needed, right? तो उसी क्वाड्रेंट पे हम लोग बात करेंगे आज. Let's get on with the video. तो practically from my personal experience, I like to keep a bike which is very simple, ठीक है? And that part of the reason is I go to remote places और उस जगह पे अगर कुछ ठीक ठाक करना हो and that has gone or something has gone bad with respect to the electricals of this bike, right? So I should be in a position to fix it myself. So that's the theme I follow when I do a modification, right? Few folks actually do modify and they just blast out in the city and all. They don't really go out or utilize their bike in the highway and other stuff, right? So again, we are going to talk about कि वो at all is it really needed or not. तो Indian bikes में कब कोई भी बाइक ले लो, लोअर रेंज से लेके अब ले लो हायर रेंज तक, सुपर बाइक्स तक भी ले लो. The very common factor which comes out which is not right and people are not happy is the lights. तो कोई भी बाइक्स की जो है ना स्टॉक हेडलाइट्स एकदम बराबर नहीं होते. इधर उसमें रोशनी बहुत कम होती है, उसका थ्रो बहुत कम होता है, या फिर दैट स्ट्रेंथ ऑफ दैट बल्ब इज लेस, राइट? तो ये सारा चीज़ होता है. तो इन दैट एस्पेक्ट people go and you will see in almost all bikes, right, which does touring and other stuffs, right, they will have auxiliary lights. So guys, that is needed. Now how will you do that? So look at products in the market wherein you don't need to tamper with your wire and all. So it's like आपके बाइक आपके आपके जो दो लाइट का जो सॉकेट अमाउंट है वहाँ से लेके इट इज़ अ स्ट्रेट कनेक्ट टू द बैटरी एंड यू डोंट नीड टू इंटरफेयर विथ योर वायरिंग एंड ऑल. कई होता है कि वायर टेम्पर होता है, ये होता है, वो होता है, विच आई डोंट लाइक. अभी के बाइक्स में देयर आर 2 एक्सेसरी पोर्ट्स. सब बाइक्स में ऑलमोस्ट रहते हैं, नए जो भी बाइक्स है. तो हिमालयन में भी देयर इज एन एक्सेसरी पोर्ट वेर इन यू कैन कनेक्ट, बट दैट इज लोकेटेड एट द एंड, आई मीन टेल सेक्शन ऑफ द बाइक. तो वहाँ से आपको वायर खींच के लेके आना पड़ेगा, तो विच इज अ बिट ऑफ इनकन्वीनियंस. बट स्टिल for auxiliary lights you can actually look at products from Mad Dog, but again this video is not sponsored by Mad Dog. What I've heard, right, even I am actually using Mad Dogs in my Himalayan, और वो भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके बारे में बताऊंगा, इस केस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, बट दैट वी विल टॉक अबाउट सम अदर डे. सो मैड डॉग की एक जो खासियत जो है ना, उसका जो वायरिंग हार्नेस है दैट इज IP67 वाटरप्रूफ. सो वो बहुत अच्छा क्वालिटी का वायर्स होता है. और बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट फ्रॉम द लाइट पॉइंट्स, राइट, देयर आर एक्चुअली वाई शेपेड टू. सो यहाँ पे द एंड पॉइंट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस आर द लाइट्स, यहाँ से 2 जाता है, one will go to your switch, okay, and the other wires will actually directly go and connect to your battery terminal. So in this process you actually don't end up screwing your electricals, which is a very good thing. अगर lights खराब होती है, कुछ होती है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली either बैटरी का प्रॉब्लम होगा या फिर लाइट्स का प्रॉब्लम होगा. So there is nothing, no other electrical circuitry involved here. So do modifications on those lines wherein you don't need to tamper with your wires and all. So this is the electrical aspect. There is something called the ergonomics aspect, right? So बहुत सारे बाइक्स की ऐसी होती है ना कि जैसे मान लो इंटरसेप्टर पे या टू सम एक्सटेंट हिमालयन पे भी, थंडरबर्ड पे भी, राइट? सो
you have to look at the rider triangle first. So Thunderbird means it's an L shaped, right? It's kind of like this. So you're sitting on, you have a 90-degree angle like this, right? So okay. Whereas in Himalayan it is like more of this, right? Wherein your toe, your hip and your head stays in the same line. So that's how the bike is designed. Whereas an Interceptor, right, it's a bit more sporty, wherein you have to lean forward and you have a very aggressive rider triangle in terms of your legs. तो होता क्या है, जो legs का जो है ये angle बहुत steep होता है, it will be like this. तो few of us actually feel that के चलो सिर्फ हैंडल बार राइज कर लिया या फिर नया हैंडल बार लगा लिया तो इट विल बी सॉर्टेड आउट. नो, दैट इज नॉट द वे द बाइक इज डिजाइन एंड इट हैज नॉट बीन प्रूव सक्सेसफुल. आप लोग उसमें मत जाओ. if you want, right, you have to change this triangle, you have to do a modification wherein this triangle is actually altered. That triangle has to come to a different shape and then only it will give you some comfort. Else what it will happen is the lower portion of the body is still in a aggressive position. For example, in Interceptor you go with this auto motorcycles or let's say this RD350 type handlebars, right, which is a bit raised, bit wide and all. तो उसमें क्या होता है, आपको ये जो posture तो बहुत upright मिल जाता है because the handlebar is high, right, but what you don't realize that your bottom portion of the body still goes with the earlier ergonomics. तो उसमें क्या होता है, आपको you will still end up facing a tailbone. Probably आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा वाइड हैंडल बार है तो आपका ये जो लैट है इसमें थोड़ा पेन कम होगा, but you will still end up in a tailbone pain. So which is again not a good ergonomic modifications. You are spending about 3,000-4,000 rupees on this handlebar. I don't know what is the cost. मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो in a Himalayan, right? So I don't know. But in case of Thunderbird, since the rider triangle is not that aggressive, right? It is more of a sofa kind of a thing. You can actually go with that. That will give you more comfort. The reason being, your tailbone is straight. Your legs are actually in a much more relaxed position. So that's why I made that change in Thunderbird and it is actually giving me results. एक तो वाइब्रेशन कम हो गई है, दूसरी तो आपकी ये जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे टेलबोन पेन भी नहीं आता, राइट. और इसमें लैट में जो प्रॉब्लम है, जो बटरफ्लाई हैंडल का होता है ना, जो यहाँ पे इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो भी नहीं होता अभी. तो आई एम एक्चुअली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, बट आई विल थिंक ट्वाइस इफ आई हैव टू डू द सेम मॉडिफिकेशन ऑन हिमालयन, बिकॉज हिमालयन का जो राइडर ट्रायंगल है वो लोअर पोर्शन में फिर भी a bit more sporty. Might not be that sporty like Interceptor or KTMs and all, right, but it is actually sporty. तो खाली हैंडल बार चेंज करने से होगा नहीं. तो this is the ergonomy. You can modify, play around with the seats to your comfort because that doesn't change anything. Okay, अगर आपको थोड़ी हार्ड सीट चाहिए तो आप एयर सीट लगा सकते हो, जेल सीट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, तो that is okay. You can actually go ahead and do that. But on the handlebars, right, don't play around, don't fiddle around, because these bikes have been tested with in this kind of an ergonomic posture, and you know it is designed for a purpose. So वही होता है, आप purpose वाला जो पिलर है उस पर ध्यान दो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई बटन पे जाके आप देख सकते हो. तो वो पर्पस के हिसाब से वो हैंडलबार या फिर ergonomics डिसाइड किया जाता है. सो व्हाट यू आर एसेंशियली टेलिंग, राइट, कि आपका जो भी प्रायर एक्सपीरियंस है जो भी है उससे एंड दैट इज लाइक एक्चुअली वर्थ इट, एंड जो भी टेस्ट किया गया है विद दिस मॉडल, राइट, तो दैट इज ऑल एक्चुअली invalidated. So which is not the right thing, right? This is the ergonomics part. The third part is the engines, mechanicals part. तो बहुत सारे लोग हैं जो कि there are a lot of modification options available in terms of engine. आप लोग इंजन के पिस्टन ये चेंज कर सकते हो, वाल्व चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द स्पार्क प्लग्स, यू कैन चेंज द साइलेंसर, यू कैन चेंज द इंजन ऑयल एंड एवरीथिंग. सो गाइज, व्हाट आई प्रेफर, राइट, आई डिड चेंज द स्पार्क प्लग एंड नाउ इट इज टू कम विद अ Bosch spark plug. I did change it to Iridium because those are twin sparks in a single plug. So that gives much more efficient combustion, और power response भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है. This is tried and tested. That's one. The third, I did change or I would recommend you guys to go ahead and change the engine oil to from a semi-synthetic or a mineral oil to a full synthetic, but you don't change the grade. If it is like 15W50 for example in Royal Enfield, right, तो आप उसी सेम ग्रेड पे सेमी सिंथेटिक या फिर अगर आप मिनरल ऑयल पे हो
So on that same grade, don't change that grade, shift to a semi-synthetic and then to a synthetic, or maybe directly to a synthetic. That will give you a much more elongated service intervals in terms of oil change, but you do have to go with the service manual in terms of अगर वहाँ पे आपको बोला जाता है कि हाँ सर्विस 2500 किलोमीटर में करनी है तो 2500 किलोमीटर पे ऑयल चेंज मत करो, लेकिन अब बाकी सारे पार्ट्स एक बार दिखा लो. तो that's what I follow, and it is actually yielding results. The third thing is that on the silencer, there are a lot of people who actually believe कि silencer change कर दो तो हो जाएगा, सब काम हो जाएगा. भाई, you need to understand the logic in which this whole ecosystem works, right? There is a thing called air intake. अगर मान लो your air intake is a paper air filter, तो उसमें तो वैसे ही filtered air ही आता है, बहुत कम air जाएगा. Then is your combustion, right? And then is your exhaust. So you need to tweak all these three to get the optimum performance out of your bike. तो वो आप नहीं चेंज कर, आप खाली आप साइलेंसर चेंज कर देते हो, आपको लगता है कि हाँ सुपर बाइक वाला फील दे रहा है, बहुत पावर दे रहा है. भाई वो मेंटल स्टेट है, वो एक्चुअली में पावर इंक्रीज नहीं होता है. आप कम आवाज में मान लो you're cruising at 40 with a very low sound on a stock exhaust, that will give you a feel that you are not going fast. Whereas ज़्यादा आवाज में you are still cruising at 40, but it will give you a feel, since the sound is more, it will give you a feel that okay, I'm going fast. That's a mental state. That's not what is actually happening in reality. तो वो एक चीज देखो. उल्टा, if you are having a free flow exhaust and you don't have a free flow air filter, right? So it still doesn't solve the purpose. Engine is getting the same amount of air, but you are actually throwing out more gas from your exhaust, which you are not supposed to do. तो ये सारी चीज आप लोगों को थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी. नो बेसिक्स अबाउट योर बाइक, बिकॉज एक एग्जॉस्ट की जो प्राइस होती है ना वो स्टार्ट ही होता है अराउंड 9,000-10,000 रुपीज से. और एंड इफ यू डोंट गेट एनी रिजल्ट्स, आई डोंट थिंक any benefit of it. And trust me, any of this right modifications really didn't work for me. मैंने ट्राई तो किया है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ट्राई तो किया है. आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. बट खैर, इफ यू हैव डन फ्यू मॉडिफिकेशंस और कहीं अब बाहर जाके स्टक हो भी गए, तो देयर इज वन थिंग विच आई वांट टू शो यू. अगेन दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. आई गॉट दिस फ्रॉम bikesterglobal.com बोल के एक वेबसाइट है. So this is actually a tool bag from DirtSack. Okay, let me unbox this and show you. अगर कहीं पे फंस जाते हो तो एटलीस्ट ये वाला चीज़ कैरी करो and you organize your tools so that you know it doesn't scatter and you get everything in one single place. So let's unbox this. तो इसमें आता है आपका ये बैग which is of a very high quality. Okay, I'll come to this. You get DirtSack का ये मैनुअल है, कुछ तो है, और एंड यू गेट 2 DirtSack स्टिकर्स. ठीक है, लाइक दिस. तो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू गेट इन दिस वन. एंड गिर गया साइड में. और दिस इज द बैग. You see the quality, the material is actually good. It is actually waterproof, and you get this kind of chambers there, right? ऐसा कुछ दिखता है ये. तो you can see if you just open this up, right? तो इसमें आपके सारे जो भी बड़ा बड़ा टूल्स है, सेलोटेस वगैरह, ये सब आ जाएंगे. यहाँ पे these are all spanner holders, screwdriver holders and all. Okay, यहाँ पे आपका जो भी बाकी सारे जो चीज़ होती है ना, वो आप रख सकते हो. थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स के लिए भी रख सकते हो. तो एंड यू जस्ट फोल्ड इट अक्रॉस ऐसे एंड यू जस्ट कीप इट. दिस इज एक्चुअली वेरी हैंडी. You can keep your tools organized in this tool bag. बहुत काम की चीज़ है. And it cost me about 1,000 rupees in bikesterglobal.com. आप DirtSack के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो. It's called DirtSack Tool Pack. Tools इसमें included नहीं आता है, लेकिन you can get your set of spanners, you can get your set of screwdrivers and all, and you can keep this organized in one place. So this is something that you should look out for. ठीक है ना? तो खैर, दिस इज द मॉडिफिकेशन. अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, ये वाला टूल बैग निकालो, बाइक रिपेयर करने बैठ जाओ. दैट्स व्हाट आई विल डू एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइज ऑल्सो टू डू, बिकॉज इट इज यू हु ओन दिस मिसहैप, राइट? बिकॉज मॉडिफिकेशंस के वजह से अगर आपका कोई भी मिसहैप होता है रोड में, तो उसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हॉबी है,
आपने ये चीज चेंज किया and you own that consequences as well, right? तो organize your tools at least, ठीक है ना? तो खैर anyways that's what I had in this video. बाकी बातें होती रहेगी, and I'm trying to be a bit more regular in YouTube now. Let's see what happens. I hope this corona season will end और जल्दी मोटो ब्लॉग पे मिलेंगे. और एक बड़ा सा राइड में करने वाला हूँ जो कि ईस्ट कोस्ट राइड है. तो एनीवेज दैट वीडियो विल कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल गाइस, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू इट, एंड ऑल्सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन if you like this video, and do share your thoughts in the comment section. Comments gives me immense motivation. I have been getting a lot of responses in my videos, and I'm really, like, what do I say, I'm really happy about it, that my voice is actually reaching to so many people, right? So please do consider commenting down your thoughts. Let me know if I can improve anywhere. I will try to work on that. And until next video, let's keep in touch. Let's stay safe and let's ride hard. Bye bye.